Come on, we will start with the next topic, that is an eddy effects or eddy currents. Fine. Now what are the eddy currents? Fine. You know that when you take the solid conductor, right? Suppose I take the solid conductor like copper plate. Fine. When this copper plate is allowed to oscillate, if I give some amplitude, fine, so it will oscillate in this plane. It will oscillate like this, like a pendulum. Fine. Now if it takes, suppose I say it takes time t1 to come to rest, right, to come to rest. Now if I provide an electromagnets, right, suppose like this, there are electromagnets has been switched on here, we will find that this oscillation, right, comes to damped readily, right, means it comes to a stop very fast. It comes to stop very fast. Now why it happens? Right? I'll try to explain you with the help of some another example. Suppose I take a bar magnet, right? It is hanged like this and it is oscillate. Fine. You can see that it will oscillate for a longer time, but as I bring this one coil near to this, now you know that according to the Faraday law, fine, an induced current is produced in this coil which opposes the motion of this bar magnet. Fine. That means there is some current which is produced here. Fine. So suppose I say the magnetic field is in this direction from north. Fine. The magnetic field is like this from north and north. So magnetic field is like this. Fine. So the direction of the induced current which is produced here, fine, that the induced current is produced which opposes the main cause. Fine. So this motion has been hurdled, or you can say the motion comes to a stop, fine, after some time, but very fast compared to the bar magnet which was oscillate freely. Fine. Now if in place of this coil, if I bring, you can say if I bring a metallic conductor here, now what will happen? The flux linked with this metallic conductor also changes due to the motion of this bar magnet. Fine. Since the flux get disturbed and induced current, but here the induced current for the metallic solid conductor are not in the they are in the form of, you can say they are in the form of eddies. Fine. A circulating current also produced in this metallic conductor. This metallic current are in the form of eddies. Eddies means a whirlpool which is created in the water. Suppose if you put the stone or throw the stone in the water, you will find that this type of the whirlpools are created. Fine. These whirlpools are nothing but they are called eddies. Fine. That is why this, in a solid metallic conductor, the induced current which are produced, they are named as eddy currents. Fine. Since it is discovered by the scientist Foucault, so this current is also called the Foucault current. Fine. This current are also called Foucault current, or you can say they are eddy currents. They are eddies. Name has been given due to the formation, their formation or the geometry that is in the form of whirlpools. Fine. Now, what are eddy currents? Eddy currents are the induced current which is produced in the conducting sheet or the blocks, you can say they are in the solid form. Whenever the magnetic flux linked with the metallic sheet changes, an induced EMF is produced in it. These induced current which are flow in the metallic sheets are like a whirlpools. Fine. इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? Eddies or eddy currents. Fine. Since it is discovered by the Foucault, it is said to be Foucault current. Now see, I have given you the demonstration. Suppose you concentrate on the figure 1. Figure 1 consists of the copper plate. Fine. When it oscillates and it is given an amplitude, it will oscillate freely and it will oscillate for a longer time. Fine. Now if this copper plate is placed between an electromagnets, suppose this is north-south electromagnet, we will find that there is a damping in this copper plate. Fine. And it will stop readily. Fine. And this damping is said to be what? Electromagnetic damping. What you call this? Electromagnetic damping. Fine. Now I have considered the two positions of the copper plate. Fine. Which are the two positions? Suppose this is pivoted here, this is a plate, fine, and these are the north-south electromagnets. Two position. One position is this one of this plate and another position means one is coming inside the
field and one is going outside the field. Fine. So we will see both the position. This is the position number 1 I say, and this is the position number 2 I say. Fine. One is outside, means it is coming inside the field which is produced by this electromagnet. One is going outside this field. Fine. So we will concentrate on the first position. Fine. So first position is that, see, since this plate is outside this field, you can say. Fine. The field is like this. This is outside. The flux is initially 0, but when it comes inside, you can see that when this copper plate comes inside, what will happen? The flux which is linked with this, you can say the flux which is linked with this plate will change. Right? You can say in fact increase, because it is coming toward this field. Fine. When you say that when this is plate coming towards this field which is produced by this electromagnets, flux increases. फाइन. अगर फ्लक्स इंक्रीज होता है तो क्या होता है? इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है. ठीक है. अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बताया है, ठीक है, दिस डायरेक्शन इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अच्छा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों है? ठीक है, जैसे कि अगर मेरे पास ये प्लेट है, ठीक है, प्लेट का ये वाला पार्ट, ठीक है, फेसिंग विच पोल? नॉर्थ पोल. ठीक है, ये जैसे ही नज़दीक आता है, ठीक है, तो हमने फैराडे के हिसाब से पढ़ा है कि ये नज़दीक जैसे ही आएगा तो उसका मोशन क्या होना चाहिए? ऑपोज होना चाहिए. ठीक है, तो ऑपोज कब होगा? जब ये नॉर्थ है, सो दिस विल बिहेव एज व्हाट? विच पोल? नॉर्थ पोल. फाइन. देन ओनली इट विल इट्स मोशन गेट ऑपोज. ठीक है, नॉर्थ हम पहले भी पढ़ चुके हैं. नॉर्थ साइड से हमें करंट कैसे दिखता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे करंट कैसे होंगे? एडी करंट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है. चलिए अब दूसरी पोजीशंस देखते हैं. जैसे कि प्लेट हमारा इधर आ गया, ठीक है, अभी फील्ड से बाहर निकल रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, फ्लक्स डिक्रीज होगा तो फ्लक्स चेंज हुआ, फिर फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ. ठीक है, तो इंड्यूस करंट जब प्रोड्यूस होता है तो हम लेंस के हिसाब से अगर हम डायरेक्शन देखना चाहें तो डायरेक्शन क्या होगा? विच ऑपोज इज द मेन कॉज, इसका दूर जाना. ठीक है, तो इसको नज़दीक लाने के लिए ये डायरेक्शन सर्कुलेटिंग करंट कैसे होना चाहिए? ठीक है, इट विल बिहेव एज अ साउथ पोल. फाइन. तो करंट कैसे होना चाहिए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो इधर करंट कैसा रहेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट को हमने इधर एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, पर एक उसका साइड इफ़ेक्ट है कि एडी करंट्स, ठीक है, जो प्रोड्यूस होते हैं वो इतनी हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिससे पावर लॉसेस होते हैं. ठीक है, अब पावर लॉसेस कैसे होते हैं? यू नो, पी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वेयर. फाइन. सो आई स्क्वेयर, सो जो ये आई इंड्यूस करंट है, ठीक है, जिसकी वजह से पावर लॉसेस होते हैं, तो वो पावर लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए क्या किया जाता है? ठीक है, इस कॉपर प्लेट के अंदर, ठीक है, ऐसे स्लॉट्स बनाए जाते हैं, ऐसे अंदर स्लॉट्स बनाए जाते हैं लाइक दिस. ठीक है, अब हमने देख लिया, ये भी चेक किया कि अगर ये स्लॉट्स बना के इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर, ठीक है, ऑसिलेट किया जाए तो ये काफ़ी टाइम लेता है डैम्पिंग के लिए. पहले तो कैसा था, जल्दी इसके ऑसिलेशन स्टॉप हो रहे थे, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एडी करंट्स जो होते हैं इसके अंदर मिनिमाइज़ हो जाते हैं. कैसे मिनिमाइज़ हो जाते हैं? हमने क्या किया? ऐसे स्लॉट्स प्रोड्यूस करके एरिया को रिड्यूस कर दिया. ठीक है, तो अगर एरिया रिड्यूस हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. अच्छा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाता है. ठीक है, तो ये इंड्यूस करंट जो होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जिससे ऑपोजिशन जो होती है एडी करंट्स की वजह से जो मिल रही थी इसके ऑसिलेशंस को, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो टाइम लेता है. ठीक है, और काफ़ी देर तक ऑसिलेट करता है. जबकि ये वाला जो होगा, अगर हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में रख दें, ठीक है, तो इसका ऑसिलेशन जल्दी डैम्ड हो जाता है. ठीक है, सो आप उसको क्या करेंगे? पावर लॉसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए, जिसकी वजह से हमें हीट बहुत प्रोड्यूस होती है, जूल हीट की वजह से. ठीक है, तो इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, कई बार वो मेटल को क्या कर देती है? पूरा मेल्ट कर देती है. ठीक है, जबकि ये इसकी एक प्रॉपर्टी है जो हम यूज़ भी करते हैं एज एन एप्लीकेशन. ठीक है, लेकिन हमें क्या करना होता है? ये जो लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, उसको मिनिमाइज़ करना भी है. ठीक है, तो वो मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे स्लॉट्स बना दिए जाते हैं, या आप लेमिनेटेड कोर्स आप लगा सकते हैं. एक मेटल के ऊपर एक लेमिनेटेड पतला सा कोर बना दिया, लेमिनेटेड कोर लगा दिया.
ठीक है, उससे क्या होगा, जो एडी करंट्स होंगे उसका पाथ जो होता है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है। ठीक है, पाथ अब जब डिस्ट्रक्ट हो जाएगा या पाथ को हमने लंबा कर दिया जाए, ठीक है, या पाथ डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, एडी करंट्स मिनिमाइज हो जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस।